कैमरा ऑन करो सभी जल्दी से। कैमरा ऑन सभी। Okay, let me share the screen. उसको अगर कट पेस्ट कर सकते थे पहले मेरे को तो बेटर था। ओके, एनीवेज लेट मी थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ हम कर क्या रहे हैं, हालांकि हम ज्यादा आगे नहीं गए, लेकिन अब इसमें ये हो जाएगा। I have got a continuous linear function and I have got a mapping phi from x star under weak star topology, right? It's a mapping to our field R in this case, such that phi is linear and continuous. I want to show that phi is of the type x bar. यानी मैं दिखाना चाहता हूँ phi of x star behaves as the same thing as x cap at x star for all x star belonging to x star. That means I want to show that phi of x star is the same thing as x star at x, क्योंकि इसका मतलब ये है। तो ये मैं करना चाहता हूँ। अभी मैंने क्या लिया, मैंने लिया m equal to kernel of phi, यही, और फिर दिखाया I would have this thing, I would have और चूंकि मैं ये मान रहा हूँ ये प्रॉपर सबस्पेस है, so there would be f belonging to x star such that a neighborhood v of f, v is a weak star open set, right, of f containing f such that v intersection m is equal to 5. और फिर मैंने इसका एक सब बेसिस एलिमेंट दिखाया, then you must have this vf equal to all g, that means a basic subset f of xi minus g of xi in mod less than epsilon, I runs from 1 to n, it must be contained in, all of these sets must be contained inside v, और फिर इन fi's और xi's की मदद से epsilon i's are positive numbers and xi's belong to x, इनकी मदद से मैंने एक मैप डिफाइन किया psi from x star to Rn, of course, such that psi of g is equal to this, ये जो ये numbers है यहाँ पे g of xi, इनका n tuple, I runs from 1 to n, क्योंकि ये भी finitely में नहीं होंगे, these are numbers and this is well defined map. और फिर मैंने कहा चूंकि xi cap जो है, मैं सीधे में लिखता हूँ, by definition xi cap is at xi cap at g is equal to g of xi. This is the definition for a function, जो भी ये होगा. Therefore, and xi cap जो है is weak star continuous by definition. और चूंकि इस पे weak star topology है, right? और अगर इस पे weak star topology है, तो इसका मतलब ये होगा, ये जो कंपोनेंट्स सारे के सारे हैं वो continuous है, और अगर components of a function that is multi-valued, उसकी जो component functions अगर सारी की सारी continuous है, तो वो function भी continuous है. तो psi is a continuous linear map. तो continuous linear, क्योंकि linear तो obviously होगा क्योंकि G linear है, मतलब वो ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं. तो psi is a continuous linear. Moreover,
मोर ओवर हमारा जो psi of f होगा, it does not belong to psi of n. Why? Because f does not belong to kernel of f. Oh, that's obvious. Sorry, kernel. F does not belong to M, which is kernel of phi. अगर ये M में नहीं है तो of course psi of f जो है psi of M में नहीं है. For otherwise हम कह सकते हैं there would exist G belonging to M such that नहीं, ये इसमें हो सकता है अगर ये M में ना भी हो, क्योंकि you have many to one function, है ना. तो तुमने इनवर्स इमेज लिया, इनवर्स इमेज might contain the elements that are not in the forward sense. मेरे कहने का मतलब है देखो f suppose M में नहीं है, M is the inverse image. ये मेरे कहने का मतलब है यहाँ psi अगर यहाँ पे M है, यहाँ पे psi of M हम ले रहे हैं, तो इनवर्स इमेज में ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं जो ओरिजिनल इमेज थी अगर फंक्शन है मेनी टू वन. लेकिन तब वो मेनी टू वन का मतलब यू वुड हैव psi of f इक्वल टू psi of g फॉर सम g बिलोंगिंग टू m. सो अगर ऐसा है, सो दैट इज, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब अगर दो फंक्शन सेम है तो psi of f किसके बराबर है, तो यू वुड हैव, लेट मी राइट इट, psi of f होगा f of xi I runs from 1 to n would be equal to g of xi I runs from 1 to n. इसका मतलब होगा f of xi is equal to g of xi for all I running between 1 and n, which would imply that, what would it imply? It would imply that g belongs to v, क्योंकि g तो फिर इसको satisfy करेगा ना, क्योंकि अगर f of xi अगर g of xi के बराबर है तो कहने का मतलब ये होगा कि ये सेम है तो जीरो है, सो दे आर लेस देन एनी एप्सिलॉन आई, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो ये इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन आई, सो इट वुड बी कंटेन इनसाइड v, व्हिच वुड बी अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि g जो है m में है बट m इंटरसेक्शन v जो है दैट्स इक्वल टू 5, जो कि हमें शुरुआत में ही पता है, कॉन्ट्रडिक्शन. So we can assume that ये जो phi of f है वो phi of m में नहीं है. तो you have got therefore psi of f does not belong to psi of m, but psi of f जो है it exists, है ना, because f belongs to x star, तो psi of f जो है वो exist करेगा because psi जो है it's a map from x star to rn, तो psi of f would belong to rn, तो it would imply that जो psi of m है which is range of a linear space, therefore it would be a subspace, so it would be a proper subspace, क्योंकि एक Rn में एलिमेंट है जो psi of m में नहीं है, is a proper subspace of Rn. Okay, so suppose की dimension है, so let dimension, इसमें थोड़ा सा है complicated but I'm trying to make it easier as much as I can. So let it be equal to j, क्योंकि proper है तो this should be less than n. You have to remember that psi is a map from x star to Rn, and of course ये जो phi है that's a map from x star under weak star topology on x star to R. So I think that should be kept in mind. So अगर ये n है, now let's denote by alpha 1. alpha 1 से मैं denote करूंगा psi of f, यानी alpha 1 जो है ये एक n tuple है, and I know that ये जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है. In fact, of course
ये नॉन जीरो इसलिए भी नहीं होगा बिकॉज जो f है इट डज नॉट बिलोंग टू व्हाट शुड आई से अल्फा 1 इज एन टपल और चूंकि ये नॉन जीरो क्यों होगा, क्योंकि अगर ये जीरो होगा फिर तो ये उसमें बिलोंग करेगा ना, वो जो भी मैंने कहा अगर ये सारे के सारे जीरोस होंगे तो ओके इट्स नॉट इक्वल टू जीरो फाइन, क्योंकि जीरो तो होगा ही ना इसमें। देखो जब मैं कह रहा हूँ psi of m is range of a linear space inside Rn. So range of a linear space is a subspace. So psi of m is a proper subspace. और सबस्पेस में जीरो तो होता ही है, और अगर ये जीरो होगा psi of f, then it must belong to the psi of m, which it doesn't, so it cannot be zero. Keeping that in mind, now let alpha 2, let this set alpha 2, alpha 3, so on and so forth up to alpha, इसको मैंने notation इस तरह से लिखी, it doesn't matter, these are just j vectors, और मैं मानता हूँ be a basis for psi of m. तो ऑफ कोर्स इसकी एक बेसिस होगी क्योंकि मैं मान रहा हूँ इसकी डायमेंशन j है, लेकिन मैंने उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय आर्गुमेंट मैंने 2 से j+1 तक शुरू किया। These are just नोटेशन के हम कहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन होने चाहिए j क्योंकि मैं मान चुका हूँ इसकी जो डायमेंशन है वो j है। ओके देन एंड अगर इसकी बेसिस है तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, या मैं इस तरह से लिखता हूँ देन alpha 1, alpha 2, so on and so forth up to alpha j+1, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, just to make it a little easier, is a linearly independent set in Rn. देखो ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होता, क्योंकि ये तो बेसिस है, ये तो लीनियरली डिपेंडेंट है, और अल्फा 1 इसको बिलोंग नहीं करता, नॉन जीरो है, तो अगर मैं इसको एडजॉइन करूंगा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा, बिकॉज अल्फा 1 कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बिकॉज दिस इज अ सबस्पेस, और अल्फा 1 इसमें बिलोंग नहीं करता, क्योंकि अगर ये इसको इट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इट मस्ट बिलोंग टू द psi of m, and alpha we have proved that it does not. Anyway, so we can extend any linearly independent subset can be extended to a basis. We can extend it to a basis, let me call it alpha 1, alpha 2 up to alpha n. ये इसमें important step है of Rn. Any linearly independent set can be extended to a basis of the whole space. तो मैंने इसको extend किया, तो once I have done that, अब हमें लास्ट माइल जो है ना इस थ्योरम का, and define another map. I define beta on Rn to R by beta of alpha 1 is equal to 1 and beta of alpha I is equal to 0, 2 less than equal to I less than equal to n. मैंने कहा मैं ऐसा मैप डिफाइन करूंगा जो अल्फा 1 को 1 पे भेजे, राइट, और हमें पता है अगर हम लीनियर मैप को डिफाइन करते हैं ओवर बेसिस देन इट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड्स, यानी मेरे कहने का मतलब है बीटा ऑफ अल्फा फॉर अल्फा बिलोंगिंग टू Rn is defined as summation I runs from 1 to n. Of course, let me write it as, यहाँ थोड़ा नोटिस, हमारे पास x's है, अल्फा i's है, यहाँ मैं क्या रखूँ, let me x i's alpha i's इस तरह से होगा ना, क्योंकि alpha i's is a basis, so I should be able to write every, let me cut it here. तो वैसे ये तुमने किया होगा किसी जगह कि बीटा जो है इट्स अ लीनियर मैप Rn to R, और मैं इसको बेसिस पे इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, अल्फा 1 is equal to 1 and beta of alpha I is equal to 0 for other, this is a basis.
यूजुअली नहीं इन स्केलर्स को इस तरह से बेस कर सकते हैं, मतलब यूजुअली वी डू नॉट बाय अल्फा 1 अल्फा बीटा गामा इनसे स्केलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ही एक्स और वाइज के लिए कुछ और कर चुके हैं। तो so प्रॉब्लम ये है कि if alpha belongs to Rn, then it can be written as a combination, a linear combination of its basis vectors, यानी alpha would be some। अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं स्केलर्स किसको यूज करूं। alpha would be equal to summation alpha I into some, क्या करूं, रियल नंबर्स मुझे चाहिए, हाँ चलो Ri, I runs from 1 to n, then beta of alpha is defined as summation Ri beta of alpha। इस तरह से ये extend होता है। once we define a map on the basis of a vector space, we can extend it to the whole for every alpha belonging to R। तो मेरे कहने का मतलब है, जब मैं कह रहा हूँ मैंने ये डिफाइन किया इस तरह से, तो मेरे कहने का मतलब है, ये यूजुअली बुक्स नहीं लिखती कि it will be extended to the whole space via this formula। we call it extending linearly to the whole space from the basis। okay, anyway, ये तो एक digression था। so I have got now beta is a map from Rn to R, and beta is linear। you have to remember it's linear, मतलब you can check, do it yourself, यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं, and hence beta is continuous, क्योंकि every linear map on a finite dimensional space is continuous। ये तुमने किया होगा इसमें फंक्शन एनालिसिस 1 में। finite dimension में हर कोई चीज जो लीनियर है वो continuous। so beta is a functional, it's a scalar valued linear continuous function। so अगर मैं अब combine करूं beta after psi, now you have to remember psi is a map। चलो इस तरह से x star से हम जा रहे हैं Rn में via this map psi, और उसके बाद बीटा से जा रहे हैं R में। if we combine this would be beta composition psi। so because it is a composition of two linear maps and two continuous maps, so it is a continuous linear map। Yani it is a continuous linear map from x star to k, in this case R, so therefore it must belong to x double star। and we also have for G belonging to M equal to kernel of phi, मतलब अगर G M में है, then beta of psi of G is equal to, of course, beta of psi of G, that is equal to 0। why? because psi of G is basically belongs to, उसकी जो basis है ना, psi of M की, चलो psi of M जो है, which is the same thing as where G belongs to M, है ना, psi of G। psi of M is spanned by, इसकी जो basis थी वो है alpha 2 alpha 3 up to alpha j plus 1, यानी it would be a combination of these vectors, और ये जो हमने बीटा डिफाइन किया ये उन सबको 0 कर देगा। so you will get 0 via this formula। yeah. okay, so ये सेटल हो गया। thus we have, क्या होगा, kernel of phi जो है, that means this would be contained in kernel of beta composition psi, क्योंकि हर कोई चीज को ये 0 पे भेज रहा है तो इसके कर्नल में बिलोंग करेगा। so that oh just a minute, beta composition psi, थोड़ा सा और भी हमें चाहिए एक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। हाँ, साथ में ये भी चाहिए, kernel of phi is contained in
kernel of beta composition psi. How about reverse? क्या reverse भी true होगा? And how about, उससे पहले एक और चीज मुझे चाहिए, beta composition psi. I should write थोड़ा सा इस तरह से, अगर मैं लेता हूँ psi of phi, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें कुछ है इधर. Okay, I would kernel of phi is contained in kernel of beta composition psi. क्या converse भी true है? Is kernel of beta composition psi also equal to kernel of phi? वो चेक करना पड़ेगा. What would be kernel of beta composition C? ये किन किन को 0 पे भेजेगा? Right. Kernel of phi is somewhere inside here. P is a map from X star. P is also a map from X star to R. Oh, and I got kernel of phi, that is okay. तो ये इसमें है और साथ में ये भी है. साथ में क्या है? साथ में बीटा composition psi of f जो होगा वो होगा बीटा of psi of f. ये मैं जरा यहाँ इरेज करता हूँ, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है. हाँ, तो it is beta of psi of f, and you have to remember what is f. Psi of f is, this is just beta of alpha 1, क्योंकि psi of f को मैंने डिनोट किया था by alpha 1. हाँ, और बीटा ऑफ अल्फा 1 जो है वो है 1, so this should be equal to 1. also साथ में phi of f भी 1 है. वो शुरुआत में हमने लिया था, क्योंकि ये कर्नल ऑफ psi में नहीं है तो मैं ले सकता था इसको 1. तो there is a result in functional analysis. हमने उसका आधा ही किया बेसिकली. यानी if you have two functionals, two bounded linear maps, अगर kernel of f is equal to kernel of g, ये हमने किया है, but in fact more is true, and f of a is equal to f of g for some a not belonging to kernel of f, then f and g are same. Actually more is true. Actually there is a more general result जो हम करेंगे आगे, कि अगर ये कंटेन्ड हो और साथ में ये हो कि f of a is equal to f of g for something not belonging to kernel of f, then also f is equal to g. तो ये हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि kernel of phi is contained here and they agree. ये जो phi and this map, they agree at an element outside it, and f lies outside the kernel of phi, इस वाले kernel से, and f does not belong to kernel of phi. So we can conclude it implies that beta composition psi must be the same as phi. So once we are done, हम थोड़ा आगे बढ़ गए. Now let E1, E2 up to En be the standard basis of Rn. Standard basis of Rn. And let B be equal to Bij n cross n matrix, be the transformation matrix, that is EI is equal to summation beta ij, j runs from 1 to n, alpha j. Of course, I runs between 1 and n. तो तुमने किया होगा जब हम चेंज ऑफ बेसिस करते हैं, so you get a matrix. So I'm changing. If I change my basis, जो मैंने एक basis ली थी, original नहीं, इस theorem में ली थी, ये as a basis of Rn.
तो जब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा into a basis of the standard basis यानी E1 into En, we will get a matrix in जिसका formula ये होता है, मतलब ये relation है उस matrix. How are the two bases related is given by this formula. मतलब ऐसा कुछ नहीं है. Then अब हम थोड़ा सा काम करेंगे. For A equal to A1, A2, so on and so forth, अगर कोई भी an लेंगे equal to summation ai ei, I runs from 1 to n. If this belongs to Rn, beta of A, as you know, would be summation I runs from 1 to n ai into beta of ei. But beta is defined on the basis alpha j's, but we can convert it via this formula. This is equal to summation I runs from 1 to n ai beta of summation j runs from 1 to n bij alpha j. अब चूंकि बीटा लीनियर है, this should be summation I runs from 1 to n ai summation j runs from 1 to n beta ij multiplied by beta of alpha j. Now as you run j from 1 to n, we know that only एक ही बचेगा जब, क्योंकि ये जो बीटा है वो सभी अल्फा इसको 0 करता है, तो जब j 1 होगा तब ये 1 होगा, बाकी हर जगह 0, यानी इस सम में एक ही टर्म बचेगा. तो मैं लिख सकता हूँ बीटा ऑफ a is equal to summation I runs from 1 to n ai beta I1, क्योंकि एक ही नंबर बचेगा उसमें से. So once I have written that, तो यहाँ पे लिख सकते हो because beta of alpha j is equal to 1 if j is equal to 1, it's equal to 0 otherwise. Okay, now put x equal to summation I runs from 1 to n beta I1 into xi. Now this is an element that belongs to x, right? Because xi's are जो हमने वो सब बेसिस एलिमेंट खड़ा किया था ना, हमने इनकी मदद से खड़ा किया था, ये वही xi's मैंने यहाँ लिए, combined with these scalars जो मुझे यहाँ मिले. Then for g, I hope belonging to x star, we have phi of g is equal to beta of psi of g, because phi and beta and psi हमने अभी किया, they are the same, which would be beta of psi of g, और psi of g हमने define किया था initially as an n tuple, so g of xi I runs from 1 to n. अब हमें पता है ये n tuples के साथ क्या करता है ना, so लेकिन for any n tuple beta of a is given by this formula when मैंने change of base, तो यहाँ पे ये आना चाहिए summation I runs from 1 to n beta I1 g of xi. लेकिन अब g लीनियर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ g of summation I runs from 1 to n beta I1 xi, but beta, this is just g of x. तो अगर ये g of x है, it is can be written as x cap of g. Now I have got for all g belonging to x star, phi of g is equal to x cap g, which means that phi is equal to x cap. Oof. For some x belonging to x or x cap belonging to x cap. So what I am trying to say, we are done. हमें यही दिखाना था. This phi can be realized like this. Let me, इसको मैं चाहूँगा तुम फिर से रिवाइज करो, अगर कहीं समझ ना आए तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि ये लंबा चौड़ा था, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी था कहीं कहीं पे, क्योंकि हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, फिर इसकी मदद से दूसरा, फिर उसकी मदद से तीसरा, तो यहाँ 3 मैप्स आ जाते हैं. वी स्टार्ट विद दैट सब बेसिस एलिमेंट, उससे मैं साई खड़ा करता हूँ, फिर मैं बीटा खड़ा करता हूँ एज अ मैप ऑन आर एन, फिर उन सब का कॉम्बिनेशन मिला के मैं ये प्रूव करता हूँ. सो इसलिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसको तुम ठीक से देखोगे, 1 2 3 बार पढ़ोगे तो
so that you understand it. इसको करना ही होता है, ये जो theorems होते हैं इस टाइप के बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसको तुम्हें 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा. So इसमें कहीं पे क्वेश्चन कोई, क्योंकि मुझे लगता है आज इतना ही करेंगे हम, नेक्स्ट वाला नहीं करेंगे गोल्डस्टाइन, जो अब इससे आराम से प्रूव हो जाएगा बेसिकली. हमें इतनी मेहनत सिंपली गोल्डस्टाइन के लिए, क्योंकि वो तुम्हें करना है एग्जाम मतलब सिलेबस में, लेकिन बिना इसके यूज के वो नहीं हो सकता. सो इफ आई स्टॉप शेयर, तो मुझे बता दो कोई क्वेश्चन कहीं पे. कुछ या सब सोए हैं यार, मैं खामखा बता रहा हूँ ये डिफिकल्ट है, ऐसे करो वैसे करो. नो सर. अच्छा, तो कहीं पे कोई क्वेश्चन? नो सर. हाँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा तुम इसको पढ़ो और फिर क्वेश्चन कहीं ले आओ. अच्छा, आज तो 28 आए हैं, दैट्स गुड. हमारे 28 ही है ना? 29 थे अभी तक, किसी ने लीव किया. नहीं, 29 में मे भी एक हो ना, तो इसलिए मतलब 28 ही, तो इसका मतलब 28 आए हैं, तो ऑलमोस्ट सभी आए हैं. Okay, so let me stop it here.